Okay, so today we are moving towards the topic simple distillation. We need to understand that how it works and what is this actually. Right. So first of all, I just want to draw the structure of this so we can understand this properly. First of all, we have a jar over here, which is known as round bottom flask. This is known as a round bottom flask that we have, right? It will be like this. This somewhere like this. This is round bottom flask, right? And we have a thermometer attached with this inside, right? Like this. It is attached thermometer over here, right? And we know that the tip of the thermometer is always red because it is made up of mercury over here. This is mercury thermometer, right? So it will be like this. And then also we need to use a cork over here, right? Which is used to close this system over here. This is bung. This is known as bung or cork. We need to use over here to close the jar, right? Over here, it is like this, right? So this is thermometer, right? It is used to measure the temperature, right? And this is what? This is bung, which is used to close the this flask, right? You can call this flask as distillation flask, right? It is easier for you. So you can call this as distillation flask, right? Distillation flask, right? इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा साइड आउट. Distillation flask है ये बच्चों, ठीक है? This is distillation flask. Okay, but so this is round bottom flask and distillation flask. You can call this the distillation flask, or you can call this round bottom flask. But the distillation flask is good, or if you want to name this as round bottom flask, so you can even call this a round bottom flask as well. Okay, just give me a minute, Bacho. Distillation flask, you can call this as distillation flask. The name is distillation flask, right? This is distillation flask, right? And you can see this in the distillation flask, we have a bung, which is used to close this jar. And right, we have a thermometer, which is attached with this. इसलिए हमने इसको अटैच किया इससे ताकि यहाँ से किसी तरह की कोई गैस बाहर ना जा सके, ठीक है? Then we have one more thing attached with this over here, which is यहाँ पर ये क्रॉस में नहीं बन पा रहा है, तो लेट्स ट्राई कि अगर ये बन जाए तो अच्छी बात है. No, it's not. क्रॉस में नहीं हो रहा है हमारे पास, शायद कोई और यहाँ पर शेप हो. I think we can use this one. Yes, this one can be used over here. इसको हम रिमूव कर देते हैं. This one can be used. देखिए ये इस तरह के आपके पास एक और यहाँ पर अटैच होता है जिसको आप कहते हो दिस इज कंडेंसर, राइट?
यहाँ पर इस तरह की आपके पास एक ट्यूब होती है which is known as condenser, right? और इसके ऊपर भी आपके पास जो है एक ट्यूब अटैच्ड होती है. Let me see if we have. Okay, no. So इसके ऊपर एक और हमारे पास अटैच होता है जिसमें से आपके पास वाटर रोटेट कर रहा होता है. ठीक है ना. This is like this over here, and we have one more to draw. This is known as condenser. ये मैंने कोशिश की है बनाने की कंडेंसर. आप समझने की कोशिश कर लें, मैं बनाने की कोशिश कर लेता हूँ. ठीक है बच्चों. This is what a condenser type thing मैंने बनाने की कोशिश की है. अब आपने देखें इसमें कुछ चीजें आपने याद रखनी हैं और वो चीजें क्या हैं बच्चों. This is what we need to understand over here. This is distillation flask, that's fine. And over here we have this one. This is something known as condenser. एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप कंडेंसर का नाम देते हो. ठीक है ना. इस कंडेंसर में एक्चुअली यहाँ से वाटर इन हो रहा होता है. यहाँ से वाटर इन होता है और यहाँ से वाटर आउट होता है. राइट. ये अंदर वाली ब्लैक ट्यूब में नहीं जा रहा पानी. ठीक है ना. सिर्फ इसके अराउंड सर्कुलेट करेगा. राइट. एंड वी हैव thermometer as well. We have distillation flask as well. And one more thing we should attach over here is receiver flask. We need to attach a receiver flask as well over here. Right. This is water inlet and outlet, and this is one of the flask over here जिसको हम बोलते हैं receiver flask. वो भी यहाँ पर होता है और वो किस तरह का होता है. It should be like this. ये इस तरह का आपके पास एक रिसीवर फ्लास्क होता है जिसको आप कॉनिकल फ्लास्क भी बोलते हो. ये वही है दरअसल. बस इसको क्योंकि हम टाइट्रेशन में भी यूज कर रहे हैं तो इट इज टर्म एज रिसीवर फ्लास्क. राइट. ठीक है बच्चों. तो दिस इज रिसीवर फ्लास्क which is known as conical flask. But right now you are doing simple distillation, so you can use the name for this which is receiver flask. वैसे आप इसका नाम क्या देते हो. आप इसको नाम देते हो टाइट्रेटिंग फ्लास्क या आप इसको नाम देते हो कॉनिकल फ्लास्क. क्योंकि अभी आप सिंपल डिस्टिलेशन में इसको यूज कर रहे हो तो इसको आप नाम क्या दोगे. दिस इज रिसीवर फ्लास्क क्योंकि यहाँ पर आपके पास रिसीव होगा सब्सटेंस. दिस इज कंडेंसर. ओवर हियर यू आर गोइंग टू इन वाटर. यहाँ से वाटर आप इन करेंगे और यहाँ से वो वाटर जो है आउट हो जाएगा. ठीक है. वाटर आउट. This is the whole apparatus that you need to understand for simple distillation. This is the whole apparatus. Now, why we are doing simple distillation? Yes, any one of you. Do you know why simple distillation is used? Yes, Farwa, do you know why can we use this process or this method? What is the purpose of using this? So to separate liquids. To separate liquids. Okay, to separate liquids from where? A mixture. From a mixture. Yes, very good. So why we use this process, bacho, you need to keep remember this. Why we use this process? This is very important to understand. For example, you have a salt solution. For example, you have a salt solution, right? This salt solution can be separated into salts and water, right? It can be separated into salt and water, right? We can separate this process, or we can separate these two things into the separate things. Like for example, अगर आपके पास salt water है, नमकीन पानी है आपके पास, आप उसको सेपरेट करना चाहते हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो जिसके अंदर सिर्फ सॉल्ट और सिर्फ पानी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो. उसके लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं. आप लोग कह सकते हैं बच्चों सर उसके लिए तो हम एवापोरेशन यूज नहीं करते. तो एवापोरेशन बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप, लेकिन आपको ये याद रखना है बच्चों कि एवापोरेशन हम क्यों यूज करते हैं और सिंपल डिस्टिलेशन हम क्यों यूज करते हैं. You can use evaporation or crystallization to separate soluble solids, right? ये salt soluble solid है तो आप इसके लिए भी evaporation और crystallization यूज कर सकते हो. बट डिफरेंस क्या है दोनों प्रोसेस में? डिफरेंस ये है, evaporation जब आप करते हो तो आपका सारा जो पानी होता है या जो आपका लिक्विड होता है वो evaporate हो जाता है और वो evaporate होकर उड़ जाता है.
सारा का सारा ना, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ रही होती है सेपरेट होके वो सॉल्ट आ रहा होता है, ठीक है ना। एवापोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन से आप लिक्विड को उड़ा देते हो और आप सॉलिड को हासिल कर लेते हो। यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर सीन ये है कि आप यहाँ पर सॉलिड को छोड़ दोगे और पानी को कलेक्ट कर लोगे या लिक्विड को कलेक्ट कर लोगे। सो दिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच यू एक्चुअली गेन द लिक्विड, राइट। तो उस मिक्सचर में से आपको लिक्विड हासिल करना है आप, ठीक है ना। तो दिस इज द वे टू हाउ वी कैन कलेक्ट लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल, हमारे पास ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। वी हैव सॉल्ट सॉल्यूशन, यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है। और दूसरा ये कि आप यहाँ पर बच्चों आपके पास यहाँ पर ये जो आपके पास फ्लास्क लगा हुआ है इसके अंदर आपके पास फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्ट सॉल्यूशन है आपके पास, इसमें आप उसको नीचे से क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ठीक है ना। उस सॉल्यूशन को आप क्या कर रहे हो, नीचे से हीट कर रहे हो। अब मुझे ये बताएं कि सॉल्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है NaCl का नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट होता है 801, जो कि आपको याद नहीं करना, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। 801 मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉल्ट उसका NaCl का, राइट। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, यानी 100 पे पानी बॉइल हो जाता है, ठीक है ना। अब आप सोचे NaCl का जब मेल्टिंग पॉइंट 801 है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आगे होगा, राइट। उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत आगे होगा। तो जब आप इसको फॉर एग्जांपल इस बीकर को, इस फ्लास्क को जब आप करते हो हीट, फॉर एग्जांपल जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने से क्या होगा, हीट करने से आपके पास यहाँ पर पानी एवापोरेट होगा। पानी यहाँ से क्या होगा, एवापोरेट होगा। पानी एवापोरेट होने के बाद इसके वेपर्स उड़कर ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। पानी के वेपर्स उड़कर ऊपर जाएंगे, बट यू कैन सी दिस दैट ऊपर से आपने इसको कर दिया है क्लोज्ड। आपने ऊपर से इसको क्या कर दिया बच्चों, क्लोज कर दिया। तो डेफिनेटली वो वेपर्स बाहर तो नहीं जा सकते, ठीक है ना। वो वेपर्स बाहर नहीं जा सकते। अब आपके पास जो वेपर्स हैं वो उड़कर ऊपर गए, अब ऊपर से वो बाहर नहीं जा सकते, तो वो कहाँ जाएंगे, वो कंडेंसर से होते हुए जाएंगे। जब वो कंडेंसर से होते हुए जाएंगे तो आप देखें वेपर्स बहुत हॉट हो रहे होंगे, उनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। फिर आपने वहां से एक पानी इनलेट किया है, वो पानी इन हो रहा है, वो उस कंडेंसर के अराउंड सर्कुलेट कर रहा है। उस कंडेंसर के अराउंड जो सर्कुलेट कर रहा है ना पानी, उसकी सर्कुलेशन से क्या हो रहा है, वहां का एटमॉस्फेयर ठंडा हो रहा है, वहां का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है। जब कंडेंसर अगर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो जो वेपर्स होंगे वो वहां पर कंडेंस हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो रिसीवर फ्लास्क में वो कलेक्ट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर बच्चों, द प्रोसेस? जी सर। ठीक Sir, है। can you सो explain it again? yes, I can explain it again, no issue. Listen, what I am saying बच्चों कि आपके पास for example क्या है, you have कहाँ चला गया वो, yeah, yes, you have this process, you can see over here, this is actually the solution. You can see this, that we have solution over here, right? This is the solution you have in the flask, right? And for example, this is salt solution, this is salt solution, right? You are heating this solution. This is what, this is tripod stand over here, for example, right? You are heating this, and by using what, by using Bunsen burner, you are heating this, for example, right? When you heat this, so definitely salt तो नहीं उड़ सकता इसमें से ना, पानी salt तो नहीं जा सकता, तो पानी के वेपर्स उड़ेंगे यहाँ से। So water vapors start converted into gaseous state and start evaporating over here, right? अब ये यहाँ आए तो यहाँ ऊपर से निकलने की तो कोई जगह ही नहीं है, आपने यहाँ बंग लगा दिया, यहाँ से आपने इसको क्लोज कर दिया, तो दे वेपर्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, ये यहाँ से मूव करेंगे, राइट? करेंगे मूव। Yes, sir. Now you attached the water circulation over here, just look at over here, आपने क्या किया है, आपने यहाँ water की circulation कर दी है। अब यहाँ water circulate हो रहा है, the water is not moving inside, it is moving around the tube, right? उसके ऊपर या नीचे है, अंदर नहीं जा रहा, ठीक है ना, मिक्स नहीं हो रहा, अंदर नहीं जा रहा, ऊपर ही ऊपर है। अब ये ऊपर, और जैसे फ्रिज के अंदर होता है ना आपके पास, डीप फ्रीजर्स के अंदर या फ्रिज के अंदर आपके पास क्या होता है, देयर इज अ सर्कुलेशन ऑफ अ गैसेस व्हिच आर एक्चुअली lowering the temperature over there, same as it is यहाँ पर आपने पानी को सर्कुलेट कराया है, जिसकी वजह से द सराउंडिंग्स ऑफ कंडेंसर इज कूल,
राइट। तो यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप सोचें जब यहाँ से वेपर यहाँ आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, वो कंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन इट स्टार्ट कन्वर्टिंग और कलेक्टिंग इट ओवर हियर। तो ये यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, Yes, sir. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, everyone. Yes, सर क्वेश्चन Now, था few- few things to remember. जी पूछें, Sir- पहले क्वेश्चन पूछ लें। पूछें। सर इसका हम इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि डिफाइन हाउ सिंपल डिस्टिलेशन वर्क्स। नहीं, इस तरह का नहीं आता, लेकिन आपके पास ऐसा आ सकता है कि वो आपसे बोले कि आपने एक्सपेरिमेंट सेट करना है, आपने एक एक्सपेरिमेंट प्लान करना है, जो कि एटीपी में अब मस्ट हो गया है। एक क्वेश्चन मस्ट हो गया है कि आपने प्लानिंग वाला क्वेश्चन लाजमी पूछेंगे, वो 6 मार्क्स के लिए लास्ट क्वेश्चन एटीपी में। तो वो प्लान करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट दे सकते हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट दीज, तो आपने फिर इसको प्लान करना होगा। ठीक है, ओके सर। चलें अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जरा मुझे बताएं व्हाट इज दिस बच्चों? दिस रेड वन इज व्हाट? दिस इज thermometer, right? जी। Why we use thermometer, bachcho? Why we use this? To measure the temperature. Yes, we used to measure the temperature, right? This is a good thing, but remember one more very important thing for the MCQ, bachcho. Very important thing for the MCQ, bachcho. When you attach the thermometer over here, remember the tip of the thermometer should be in front of condenser opening, right? Remember this point, it is very important, right? So very important point is thermometer tip should be in front of condenser opening, right? It should be in front of condenser opening. This is the very important point for MCQs, right? Remember bachcho this point. Yes, is that clear to all of you? yes, sir. Now Yes, the sir. second thing is, what is the name of this flask? This is distillation flask. No, this is distillation flask, right? And the purple one is receiver flask, right? They both are different in look, right? Right बच्चों? सर एक क्वेश्चन था जी, सर, वो आप थर्मामीटर के बता उसकी टिप क्या होना चाहिए? the tip of the thermometer, जहां से वो सेंस करता है ना, रेड वाला जो मरकरी होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है थर्मोमीटर का, it should be in front of condenser opening. देखें यहाँ से कंडेंसर ओपन है ना, जहां से वेपर्स जा रहे हैं आगे, ओके सर, ओके इसके बिल्कुल सामने होना चाहिए। सही है? ओके सर। Then what is the name of this flask? This is distillation flask, ठीक है ना? इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि for example if you have flammable liquid inside, so you need to use water bath or electric heater, right बच्चों? For example ethanol को आप हीट कर, water और ethanol को हीट कर रहे हैं, तो ethanol is actually flammable. तो अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन आप हीट करें, so you must need water bath over here. water bath क्या होता है? आप फ्लास्क को पानी के अंदर रखते हैं ताकि पानी को हीट करें और हीट जो पानी की हीट है वो फ्लास्क को हीट करे ताकि फायर कांटेक्ट में ना आ सके डायरेक्ट ना। दूसरा ये कि आप जो है क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर यूज कर सकते हैं जहां पर आग होती नहीं है, फायर होती नहीं है, ठीक है ना? सो वन मोर थिंग टू रिमेंबर अबाउट डिस्टिलेशन फ्लास्क इज, इफ you are heating flammable substances, so you need to remember few precautions, right? Remember precautions क्या है आपके पास? Either you need to use electric heater use करें आप, या तो आप क्या यूज करें बच्चों? You need to use water bath, right? Right बच्चों? Then this is a receiver flask and it should be open all the time, right? It should be open, right? It is open flask, right? It should be open, not closed. यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए close के लिए. It should be open, right? Otherwise air आपके पास जो है क्या नाम है, air pressure बन जाएगा, वहाँ पर वो फट सकता है, ठीक है ना? You need to keep this open, right? And then what is the purpose of condenser? What is
the purpose of condenser? Condenser का काम क्या है? Condenser बच्चों, what is cool the, downs the vapor. it cool downs? The vapors. Yes, it cool downs the vapor and convert vapors into what? Convert vapors into Liquid. liquid. You need to Liquids. keep in mind. Yes. So you need to remember this. What is the purpose of condenser? It condense vapors and convert them into liquid, right? This is the main purpose of condenser. ये क्या कर रहा है आपके पास? ये कंडेंस करके कन्वर्ट कर रहा है, तो किसमें? It is converted into liquid. इसको वापस से कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, which is a very important point. Now one more thing, यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल इस तरह की चीजें पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो है ना, जब हम हीटिंग कर रहे होते हैं ना बच्चों, जब हम हीटिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर छोटी छोटी सी चिप्स पड़ी हुई होती हैं यहाँ पर, ठीक है? इसको बोलते हैं बॉइलिंग चिप्स। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग चिप्स। जब हम किसी चीज को बॉईल कर रहे होते हैं ना, तो हम उसके लिए उस वक्त ये यूज करते हैं। व्हाई वी यूज दिस? Actually they are used to ensure the smooth boiling, right? They are just used to ensure that the boiling is right, the boiling is actually smooth, right बच्चों? It is only for smooth boiling. Smooth boiling का मतलब क्या है कि आपकी बॉइलिंग के वक्त जो है आपके पास जो है ना प्रॉब्लम ना हो, सुकून से बॉईल हो जाए और स्लो बॉईल हो। जैसे वाटर को आप बॉईल करते हैं ना, बहुत जोर जोर से उसके अंदर बबल्स बन रहे होते हैं, इस तरह के बबल्स ना बनने, ठीक है? स्मूथ बॉइलिंग होनी चाहिए, सुकून वाली होनी चाहिए, सीधी सीधी होनी चाहिए, ठीक है ना? वन मोर थिंग टू रिमेंबर अबाउट थर्मामीटर इज whenever any substance is converting, for example, whenever for example the substance is vaporization, right? Any substance is going to vaporize, so remember the temperature will be constant, right? You need to remember this one as well, that reading of thermometer will be constant. Reading of thermometer would be constant during the separation or during the vaporization of any product, right? Whenever any product is going to vaporize, the temperature would be constant over there. Temperature नहीं बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो ये टेम्परेचर बढ़ते 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 फॉर एग्जांपल 100 डिग्री तक आ गया, ठीक है ना? नाउ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। यहाँ से अब वाटर जो है बॉइलर में स्टार्ट हो गया, यहाँ से वेपर्स उड़ना शुरू हो गए, तो अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। अब टेम्परेचर 100 तक ही रहेगा जब तक सारा का सारा आपके पास सारा का सारा जो वाटर है वो वहां से एवोपरेट ना हो जाए। जब तक सारा का सारा वाटर एवोपरेट नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अब आपने याद रखनी है सारी चीजें जो मैंने आपको अभी लिखकर दिखाई हैं। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वाटर आउटलेट है ना, ये भी 1 मार्क के पेपर में पूछते हैं। वाटर इनलेट इज ऑलवेज फ्रॉम द बॉटम और इट शुड बी नियर टू द रिसीवर फ्लास्क, और वाटर आउटलेट जो होगा आपके पास, इट शुड बी नियर टू द फ्लास्क, राइट? एंड इट इज ऑलवेज फ्रॉम अपवर्ड। यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है बच्चों? सर ये सर्कल्स क्यों बनाए आपने कंडेंसर के अराउंड? कंडेंसर के ये जो मैंने वो स्पाइरल बनाया है, यस सर। ये स्पाइरल मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से वाटर सर्कुलेट हो रहा है अराउंड द कंडेंसर ट्यूब, राइट? ओके सर। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ क्या कह रहे हो बेटे? वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट, वाटर इनलेट और आउटलेट का पूछ रही हो बेटे? वाटर इनलेट नीचे से बना हुआ है, आउटलेट ऊपर से बना हुआ है। ये वाटर इनलेट और आउटलेट इसलिए बनाया है कि आप इसमें से वाटर पास कराएंगे। जब आप इसमें से वाटर पास कराएंगे तभी तो कंडेंसर का टेम्परेचर डाउन होगा ना। जब उसका टेम्परेचर डाउन होगा तभी तो वो वेपर्स को कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है? ठीक है, Yes. Yes. चलें। ओके, सो
Let's talk about one more thing. For example, graph. If you talk about graph, so how would be the graph of this? So it will be like this कि आपके पास आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, एंड एट वन पॉइंट इट स्टॉप्स, एंड ड्यूरिंग दिस पॉइंट जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर वाटर क्या हो रहा था आपके पास, बॉइल्ड हो रहा था, यहाँ वाटर क्या हो रहा था, बॉइल्ड हो रहा था, और सारा का सारा सेपरेट हो रहा था. When all the water separated, then again temperature start rising. Right, बच्चों? So this is actually change of state. This is actually what? Change of state. और change of state में सारा का सारा temperature आपका use हो जाता है state को change करने. Right, बच्चों? यार आपने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी बताया था. बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ पर भी. ठीक है बच्चों, यस सर. किसी तरह का कोई भी सवाल आपका है अगर आप मुझसे पूछ सकते हैं. एनी वन ऑफ यू, सर जो भी एक सवाल क्वेश्चन आप था. जी. सर सिंपल डिस्टिलेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों यूज करते हैं? बिल्कुल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई, राइट? अभी मैंने सिर्फ आपको क्या पढ़ाई है, सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल. राइट? आप देखें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन में फर्क ये है, अभी अभी आप क्या सेपरेट आउट कर रहे हो, अभी आप जो है सेपरेट आउट कर रहे हो किसको, आप सेपरेट आउट कर रहे हो किसको, पानी को सेपरेट आउट कर रहे हो सॉल्ट सॉल्यूशन में से, राइट? यस सर. सॉल्ट का आई टोल्ड यू दैट फॉर एग्जांपल इफ यू हैव NaCl, अगर आपके पास NaCl होता है तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कितना बताया मैंने आपको, 801 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? अबव 1000 ही होगा. It may be above 1000, right? It should be above 1000 degrees centigrade. And what is the boiling point of water? 100 डिग्री. It is 100 degrees centigrade. So see the difference between the boiling points of liquid and salt, right? What is the difference? It is more than 900, or it is more than 9 times or 10 times, right? यस सर. So there is a huge difference between the boiling points of two substances over there in a mixture. जब दो अलग अलग substances के boiling point में इतना difference हो कि उम्मीद भी ना हो सोडियम का क्लोराइड के उड़ने की, है ना? सोडियम क्लोराइड जाहिर सी बात है बॉयल हो ही नहीं सकता, वेपर बन ही नहीं सकता 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना, सिर्फ वाटर ही निकलेगा, ठीक है? ओके. तो जब सिर्फ वाटर निकलेगा तो हम कंफर्म है कि भाई सोडियम क्लोराइड तो निकलेगा नहीं, सिर्फ पानी ही पानी जाएगा ऊपर वेपर बन के. तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन. बट फॉर एग्जांपल अगर आपके पास होता मिक्सचर किसका, आपके पास मिक्सचर होता इथेनॉल और वाटर का, किसका मिक्सचर होता है आपके पास, इथेनॉल और वाटर का. तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपके पास, इट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपके पास इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटे, 78 डिग्री सेंटीग्रेड. दे आर ऑलमोस्ट नियर टू ईच अदर, राइट? Yes sir. So for example, at 78 degrees centigrade, the ethanol is going to vaporize, right? The ethanol is going to convert into vapors, but definitely there will be some evaporation as well for water molecules, right? The escaping of water molecules from the upper layer, right? Yes sir. So whenever they move from the solution to upward through the condenser, so they can be both of them, right? So that is why we need to use one more additional instrument over here, which is a reflux, which separate these different vapors separate, right? These separate vapors over there, right? Reflux क्या करता है उन The उन beads vapors को separate करता है. हाँ, yes, glass beads जो लगी हुई होती हैं उसको reflux बोलते हैं, ठीक है? Got the point बच्चों? Yes sir. सर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग से भी करेंगे या बस यही वाला है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ. लेट्स ड्रॉ अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ओवर हियर. अब ये सेम एज इट इज मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, एंड इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्रॉ अगेन. सर आप इसी के अंदर मेंशन कर दें. यही करना पड़ेगा, इसी के अंदर मेंशन कर लेते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पास, लेट्स सी, हम इसी को कुछ कोशिश करने की कोशिश करते हैं कि सही कर लें. यहाँ पर देखें आपके पास जब भी आप फॉर एग्जांपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे होगे ना बच्चों, आपने यहाँ पर एक लॉन्ग ट्यूब लगा देनी है. बस ये वाली जो ट्यूब है ना, ये लॉन्ग लग जाएगी. दिस शुड बी अ लॉन्ग ट्यूब which is known as
reflux. ये क्या कहलाता है आपके पास? Reflux कहलाता है, या आप इसको बोल सकते हैं fractionating column. This is the new addition over here if you are doing fractional distillation. So it is a fractionating column. यहाँ पर आपने ऐड करना है fractionating column, right? And this column has what? It has a glass beads over here like this, right? What is the purpose of this? The purpose of fractionating column is this. It is going to separate the vapors of two different liquids, and the one which is not completely vaporized into the gaseous form will condense back to the liquid, right? Or back to the flask, right? You can say that it condenses vapors back to the flask. It condenses the vapors back to the flask that are not completely vaporized. जो completely vaporized नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, जब तक उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आएगा पानी completely vaporized नहीं होगा, ठीक है ना? वो completely गैस में कन्वर्ट नहीं होगा. जो भी पानी उड़ के जा रहा है, it should have some mass, it has some surface area. तो वो ग्लास बीड्स जो है उसको कैप्चर कर लेती हैं, और कैप्चर करने के बाद उसको कंडेंस करके वापस से सॉल्यूशन में वापस से फेंक देते हैं. ठीक है बच्चों? And the rest of the things are same. Rest of the things are same. You just need to remember this. Fractional distillation is used to separate two liquids. ये two liquids को separate करने का तरीका है, ठीक है? अलग अलग liquids को आप use कर सकते हैं. इसको अलग अलग liquids, जैसे for example ethanol और water है, या इससे भी ज़्यादा liquids हैं, तो आप उनको use कर सकते हैं. उनको separate करने के लिए आप इसको use कर सकते हैं. It is a good idea to use. और उसके अलावा अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर ऐसे कोई लिक्विड्स नहीं है, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, तो फिर आप आपका जो दिल चाहे आप यूज कर सकते हैं. सिंपल डिस्टिलेशन इज क्वाइट सर रीजनेबल फॉर यूज, तो हम उसको ज्यादा यूज कर लेंगे तो ज्यादा आसानी है हमारे लिए. जी बेटे क्या बोल रहे हैं? सर मैं पूछा कि सर जो बीड्स जो हमारा कंडेंसर ओपनिंग होती है, जो रिफ्लेक्स के ऊपर आती है कि मिडिल में आती है? देखें यहाँ डायग्राम आ गई आपके पास. अगर कंडेंसर की ओपनिंग अगर आप रिफ्लक्स के नीचे लगा देंगे तो क्या फायदा हुआ रिफ्लेक्स लगाने का, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाने का? तो फायदा ही नहीं होगा फिर हमें, है ना? So this is what you can see, the simple distillation and fractional distillation apparatus. This should be like this. You need to remember these things over here. That बच्चों आपको याद रखना है, याद लाजमी रखना है. This point देखें इधर, this thermometer tip is in front of condenser opening, ठीक है ना? The tip of thermometer, it is very important. Tip of thermometer should be at front of condenser opening, ठीक है ना? इसका 1 नंबर आपको मिलेगा in front of condenser opening. This should be remembered to you, right? For सर one ये mark. रिफ्लेक्स कहाँ पर होता है? This is reflux. ये this is fractionating column. क्या है ये? आप इसको fractionating column बोलें, ठीक है? reflux आपके सिलेबस में यूज नहीं किया गया, आप इसको fractionating column बोलेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा. वैसे आप reflux बोलना चाहें तो कह सकते हैं, इसको reflux condenser भी बोलते हैं, ठीक है? And this is what? This is condenser we have, right? And condenser की ये जो नीचे वाली एरिया है, यहाँ से आप in करेंगे. You need to remember this. This is in and this is out. ये भी आपको 1 मार्क देगा डायग्राम्स के अंदर, तो ये भी आपने याद रखना है. This is in and this is out. और ये आपके पास रिसीवर फ्लास्क है, ये आपको याद रखना है. This is a receiver flask, right? And it should be open. You need to see this. This is an open receiver flask, right? These are the mistakes that वो आपको डायग्राम बना के दे सकता है, मिस्टेक्स कर सकता है, फिर आपसे पूछेगा बताएं क्या क्या मिस्टेक है, आप सही करके बताएं. This is bung. You need to remember this as well. Bung should use to close over here, so the vapors cannot escape from here, right? So you must need to remember कि ये close होना चाहिए, ठीक है? And this is Bunsen burner. If the substance that you are heating is flammable, so you need to remember this कि वो आपके पास फिर वाटर बाथ आप यूज करें या इलेक्ट्रिक हीटर आप यूज करें, ठीक है ना? कंडेंसर का पर्पस आपको पता है. It is doing what? It is condensing liquid, right? It is condensing vapors into liquids and collect in a receiver flask. It is also condensing vapors into liquid, but it is sending back to the flask. It is sending back to the flask and it is sending to collect in the flask. Remember these two differences over here between reflux or sorry fractionating column and condenser, right? Bacho, is that clear, the diagram?
Yes, sir. चलें, अब देख लेते हैं जरा इसकी एक आध एमसीक्यू कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं. लेट्स सी सम एमसीक्यूज. ओके, दिस इज 1 1 1 1 1 1 2 2. ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 37. What question number 37 is saying to you? The diagram shows the fractional distillation of an aqueous solution of ethanol. Aqueous solution of ethanol means you have water and ethanol, right? Aqueous solution मतलब पानी है आपके पास. Aqueous solution of ethanol, you have water and ethanol. You can see this, water and ethanol both are liquid and both are almost same boiling point, so they are very near to each other. That is why we need to use fractional distillation. We cannot use simple distillation because vapors of both the liquids can mix up, right? So what they are saying, which statement explain why ethanol is collected as a distillate? इसको बोलते हैं distillate. जो distillation के जरिए सबसे पहले हासिल हो रहा है उसको आप distillate बोल सकते हैं. तो this is distillate, right? जैसे आप residue और filtrate बोलते हो ना, इस तरह this is distillate, right? They are saying ethanol has a higher boiling point than water. अगर ethanol का boiling point higher होता तो पहले पानी collect होता, ethanol collect नहीं होता. This is wrong. Ethanol has higher melting point, wrong. Ethanol has lower boiling point than water. This is the right statement. What do you say, Bacho? Is that right or not? Yes. Yes. Because whatever the liquid having lower boiling point will collect first, right? So you need to keep remember this point as well. This one, yes. Maha, can you answer this one? This is quite simple MCQ, and I just emphasize this information twice and twice in the class. Yes. Can you please tell me the right answer of this? Maha, are you there? Yes, I think the answer is A. No. What they are asking for, they are asking for the fractional distillation apparatus should shown is being used to separate mixture of two liquids. A thermometer is missing from the apparatus. Where should be the bulb of the thermometer? बच्चों कहाँ होना चाहिए? मैंने कितनी मरतबा बताया आप लोगों को? It should be in front of B. condenser opening. So the right answer is B. Okay, the bulb should be in front of condenser opening. Okay, Yes. is that clear, Maha? Yes, sir. Okay, then we have no more excuses. Okay, no issue. We'll move towards something different like this. Now you can see this. Saad, I think आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे ना? देखो उसने पूरा explain करने के लिए बोल दिया 3 marks के लिए. Yes, sir. So how can we use this? Now, so we are saying seawater contains a variety of dissolved salts. The diagram shows a simple distillation apparatus that can be used to produce a purified water from seawater. Explain how distillation purifies seawater. Sir, मैं बताऊं? चलो बताओ. Sir, इसका आंसर होगा sir, as the solution will heat and reach 100 degrees and water will reach 100 degrees Celsius, the vapors of Okay. water will start to evaporate. As the vapors will start to evaporate, as the vapor will start to rise, they can't exit due to the bunk, so it goes in condenser where the water vapors are cooled down and pure H2O is received in receiver's flask. Yes. So heat the solution at 100 degrees centigrade, water start to evaporate, right? Vapors of water condenses through condenser, condenses, yeah, condense through condenser and collect in the receiver flask, right? That's simple. Right, Bacho? Yes, sir. Right, everyone? For some time. Now we have a few more questions over here, I think. No, there is no question about distillation. We will do
some past papers question, inshallah. Tomorrow I will just find some questions for you guys. But before this, you all need to learn all the information given over here. Just take a picture of this in your mobile phone. Just look at these informations in a day, twice or thrice, and these will be learned to you, right? Inshallah, before tomorrow's class, these will be learned to you, right? Just take a picture of this. Remember all these points. Just see these pictures twice or thrice in a day whenever you are going to have something, like when you are going to have something to meal, right? So just take a look at this picture. Inshallah, you will see कि आपको याद रहेगा ये कल की पास्ट पेपर से पहले आप लोगों को ये याद रहेगा। ठीक है बच्चों, कल जब भी खाना खा रहे होंगे आप लोग, तो खाना खाने से पहले आप इसको एक बार लाजमी देख लीजिएगा, डॉक्टर की दवाई की तरह। खाना खाने से पहले आपने इसको एक बार देखना है, 3 दफा खाना खाएंगे, 3 बार इसको देखिएगा, ये याद हो जाएगा। और कल जब मैं इसका पास्ट पेपर्स कराऊंगा, सो यू ऑल नीड टू आंसर द क्वेरीज। आप सब ने आंसर देना है, हर एक ने आंसर देना है कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। यस एवरीवन, ऑलराइट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the end of this topic over here. So just take care of yourself. We'll see you again in the tomorrow's class.